Hello student, let us study now the third type of a centered unit cell, that is ECC, that is end centered unit cell. So what is end centered unit cell? When the lattice points are on the face center of only one set of faces in addition to the lattice point at the corner of the unit cell. Now if you see this figure, see in this the atoms are present on the corner of the unit cell, and also the one set of the atom is on the opposite face. So this type of a unit cell is called end-centered unit cell. Now let us consider now the type of 7 primitive unit cell. We'll study now the type of primitive unit cell. So primitive unit cells are of 7 types. That is, first system is cubic, tetragonal, next is orthorhombic, hexagonal, rhombohedral, monoclinic and triclinic. To remember this, you can remember like this CTU. You know CTU होता है, तो CTO, HR that is for Haryana, and MT that is it is MT. So like this you can remember this CTOHRMT. C for cubic, T for tetragonal, O for orthorhombic, H for hexagonal, R for rhombohedral, M for monoclinic and T for triclinic. Now what are the axial distance and angles? So let us study this. What is the axial distance and angles? Now, if we make a cube, a simple unit cell, this. So this edge, these are the edges, okay. Now let us consider this edge as A, this as B and this as C. Now if we consider this A and B, between the A and B, alpha angle, B and C angle beta, and C and A angle gamma. So these are the axial distance and they are the angles. So this can be different, same, one can be same, other can be different, and with that we got the 7 primitive unit cell. Now let us study these. How to remember this chart? Now axial distance की बात करते हैं, तो अगर A, B और C तीनों बराबर होते हैं और अल्फा, बीटा, गामा तीनों इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, तो दैट टाइप ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड क्यूबिक. ये NaCl ZnS में एग्जिस्ट करता है. ना अगर टेट्रागोनल की बात करते हैं तो देखो इसमें A B के बराबर होता है बट नॉट इक्वल टू C. C इसमें दोनों सेम होते हैं, इसमें B इज नॉट इक्वल टू C, इसमें दोनों ही सेम नहीं होते, दैट इज A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, एंड द सेकेंड वन इज सिमिलर टू द फोर्थ हेक्सागोनल. ये दोनों सेम नहीं होते. फिर अगेन ये दोनों सेम होते हैं बट B इज नॉट इक्वल टू C, लाइक सिमिलर टू दैट ऑफ द, if you see these two are the same, second and fourth, and first and 5 is also same, A equal to B equal to C, A equal to B equal to C. So you can remember like this. अब बात करते हैं हम दोनों की, तो अगर आपको इनकी एक्सियल डिस्टेंस लर्न करने हैं, सो A is not equal to B, B is not equal to C, A is not equal to B, B is not equal to C. So like this you can remember this axial distance. Now अगर एंगल्स की बात करते हैं, आप कैसे उसको याद रखेंगे, तो फर्स्ट 3 में अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होता है. तो फर्स्ट 3 हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, और लास्ट वाला अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. सो लाइक दिस लास्ट वाला भी हो गया. अब बच गए आपके हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड मोनोक्लिनिक. तो हेक्सागोनल को कैसे रिमेंबर कर सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू 90. नाउ हियर इज आल्सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट in this case gamma is equal to 120 degree, and in rhombohedral gamma is not equal to 90 degree. Like this you can remember this. And in this case monoclinic में alpha is not equal to gamma which is equal to 90 degree,
and beta is not equal to 90 degrees.